Hi everybody, after a very long time, I bring this sweet treat for all of you. This is something written by myself. So it goes like, जिंदगी आलिशान है पर ज़रूरी नहीं खुशहाल भी हो. जिंदगी आलिशान है पर ज़रूरी नहीं खुशहाल भी हो. पैसे कितने हैं का हिसाब बखूबी रखते हो, पर खुशी है भी कि नहीं इस बात को नज़रअंदाज करते हो. वर्ड इट गोज सेइंग लाइक इफ़ मेरे पास बंगला है, घर है, गाड़ी है, तो मेरे पास सब कुछ है, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी. Always what is seem to be rosy outside do also have some thorns. So do we go about inspecting or introspecting those thorns in others' life, which we call as luxurious? पूछो क्यों भला जिंदगी में तुम खोए हुए होते हो, पता नहीं मन क्यों विचलित है, भला कहाँ जाना क्या होना निश्चित है. So it's always like we have a question in our mind that what is my goal or what is my purpose of life. So why do we question this thing? Why don't we stop worrying about where do our life would lead us, or where we should go? Why don't we just flow with the time and do our best? जब दूसरों को रोता देखते हो तब खुद भी रो उठते हो, बिना जजमेंट पॉजिटिव एनर्जी उस समय तुम क्यों नहीं लाते हो. सलाह देने से पहले दूसरों को क्यों नहीं समझते सुनते हो. ज्ञानी बनने से पहले शुभ चिंतक क्यों नहीं होते हो. परवाह नहीं करता तेरी जानकारी की, क्या तुझे परवाह है मेरे लाचारी की. So to say this, I'm actually stating that whenever we find our loved ones in difficulty, we try to sympathize with them. हम भी उनके साथ sympathize करने लगते हैं, and we try to say such things like अरे होता रहता है. So it's not always like that. Can we not be stop being judgmental and bring about some positive energy? Like, see, I know, I can understand this particular thing has happened in your life and you're facing this difficulty, but you know what's the best part? That this is the positive thing in this way. Can't we make them see the positive angle of that particular situation? And before even listening to all of it, whatever they have got, we start to interrupt and give our opinion. So thing is that he doesn't care unless and until he knows that you care. So that is why परवाह नहीं करता मैं तेरी जानकारी की, क्या तुझे परवाह है मेरी लाचारी की. जो तेरे पास है उसके लिए शुक्रगुजार क्यों नहीं है. जिसने तुझे खुशी दी, क्या उसके लिए उससे बढ़कर भी कुछ तुम करते हो. सो इट गोज लाइक कि whatever we are having, we are sometimes so ungrateful about things. We wake up every day. Do we feel gratitude towards God that he has given us one more day in life? Do we feel gratitude towards small things? And feeling gratitude is not just saying thank you, but it's beyond that. It is taking a step to give that happiness, or to make the person who gave you that happiness feel equally happy and take actions for it. If I may make sense, then comment below. Okay, so जो तेरे पास है उसके लिए शुक्रगुजार क्यों नहीं होते हो. जिसने तुम्हें खुशी दी उसके लिए उससे भी बढ़कर कुछ तुम क्यों नहीं करते हो. एंड देन जो तेरे बस में है उसकी चिंता क्यों करता तू. जो तेरे बस में है उसकी चिंता क्यों करता तू. जो तेरे बस में नहीं उसके लिए चिंतित क्यों रहता तू. So if you have a problem and you don't have solution to it, and it is out of your control, then why worry. And if you have a problem which solution you have, then also why worry. So why do you go into anxiety?
देन आई वुड लाइक टू से, आत्मा की उन्नति मानवता के जरिए करता चल तू, मानव जीवन में आत्मानुभूति कहाँ ढूंढ रहा तू. So it is like we say that we are human beings experiencing spiritual experiences, but paradoxically we are spiritual beings having human experiences. So all the time in our human being form we try to meet God, we try to find out the soul within us, जबकि हम खुद ही soul है, and we try to forget that we are peaceful souls. So that is, आगे मैं लिखती हूँ, मुस्कुराना जो चाहता है आलिंगन क्यों नहीं देता तू, जो तेरे सबसे करीब है उन पर ही गुस्सा क्यों करता तू. So if you want to stay happy, why don't you yourself spread happiness? Because whatever you give, it comes back manifolds. If you yourself will give out sadness, then you will face a lot of sadness only. And this is what happens, that जो भी हमारे सबसे करीब है, जैसे हमारी मम्मी हो गए, हमारे पापा हो गए, हमारे भाई हो गए, हमारे बहन हो गए, हम उन्हीं को सबसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं. सो वाई वी वॉन्ट टू स्टे हैप्पी, देन वेयर इज़ द एंगर इन अस. एंड hate cannot just delete love. Only hate cannot delete hate. In fact, only love can delete hate. So that is why दूसरों की कामियों को देखते हुए खुद बेहतर बनना क्यों छोड़ देता तू. दूसरों की कामियाँ देखते देखते खुद बेहतर बनना क्यों छोड़ देता तू. मीठा रस छोड़ खरास ही क्यों दिल में लेता तू. अच्छी बातों को छोड़ के हम बुरी बातें ही दिल पे क्यों लगाते हैं. दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से. जो कोई तुझ पे चीख उठे उनके दुखड़े को भी टटोलता तू. प्यार या अपनेपन के साथ उन्हें माफ़ क्यों नहीं कर देता तू. So sometimes it happens that someone unnecessary screams out at us. So we feel very bad that देखो मेरा तो कोई गलती नहीं था, but then also I'm being screamed at. So at that moment, do we try to go beyond and analyze that he or she might be the victim of some problems? That is where we need to separate the person from the situation. So hence I write, उसकी अपनी गलती छोड़ के समस्या का हल क्यों नहीं ढूंढता तू. उसकी what he has done wrong, what I have done wrong, उसकी अपनी गलती छोड़ के समस्या का हल क्यों नहीं ढूंढता तू. There might be a problem which could be sorted out. So एक सुहाना सफ़र है ज़िंदगी, मंजिल क्यों बना बैठा तू. This is the start. The life that is being blessed upon you is just the start. Why are you stating it as an end? That okay, now I have come into the life and this is the end. So that is it. Comment down below if you want more such poems. And also I would like to mention that this poem came to me after reading Gaur Gopal Das ji's book Amazing Life Secrets. So comment down below if you people want a review of that book from my side. And also comment, let me know in the comment if you people want me to read the complete book, so I'll make the video on that also. All right, okay, bye guys, thank you, have a nice day, stay happy and stay peaceful.